Let's begin with the topic that we were doing in the last class, which was about the consequences of market failure. इसी को हम आज continue करेंगे, right? So let's just begin with the next point today is, we discussed the 3 points. One was that the public goods will not be provided, merit goods will be oversupplied, and merit goods will be, this is undersupplied. Why is this saying over? Undersupplied and demerits will be oversupplied. Now we are going to move on to the next one, that is the monopoly power. So about the monopoly power, सबसे पहले we are going to talk about what monopoly is. Monopoly is a market structure in which the whole market is dominated by one private firm. Just give me 1 minute, mister. Okay. Monopoly is a market structure in which the whole market is dominated by one private firm. So there is going to be only one private firm which is dominating the whole market. So most of the supplies of the product are from this particular company going to the market and consumers are buying. As it is the dominant firm in the market, due to no competition, monopoly firm will be inefficient. Means it will try to create artificial shortages to charge higher price so consumers are at loss due to poor quality and higher price. Right? So because वो बहुत आराम से they are charging a higher price. Why? Because customers do not have any other choice. उन्होंने इन्हीं से buy करना है, so they are going to charge a higher price. They are not going to do any innovations. They will not be efficient enough
to provide the product at the lowest possible cost because कोई competition ही नहीं है. So they can charge whatever the price they want because the customers are still going to buy from them. इसलिए ये inefficient होगी. ठीक है. Now the next one, goods and services with external cost may be oversupplied. So external cost is the cost to third party who is neither the producer or neither the producer nor the consumer, right? So there are goods which can cause air, water, and noise pollution, affecting human beings, animals, etc. But they are still produced by private firms because of profitability. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो firms हैं we are talking about who are having an external cost, like the cost of the pollution that they are creating, right? वो external cost इनको bear करनी पड़ रही है. But private firms क्यों इसके बारे में ध्यान नहीं दे रही? Because probably they are making the profits from the products that they are producing. So they are not going to consider that these products, when they are produced, are creating pollution. So as long as they are gaining the profits, they are going to produce no matter what. Right? इसको भी लिख लो जरा. लिख लिया सर। Okay, so Musa, let's just continue to the next part. Goods and services with external benefit may be underprovided. वो प्रोडक्ट्स जिनके एक्सटर्नल बेनिफिट होते हैं बट वो अंडर प्रोवाइड किए जा रहे हैं. ठीक है.
external benefit is the benefit to the third party who is again neither the producer nor the consumer. There are goods like many vaccinations which are provided for free and they are also provided in large supply by the government, not by the private sector. Why? अब पहली तो चीज ये कि vaccinations can result in external benefit. अब how a vaccination can result in an external benefit? हाँ जी मूसा, पहले तो इसका जवाब दें। सर वैक्सीनेशन का एक्सटर्नल बेनिफिट। जी, जैसे कोविड की वैक्सीन है, उसका क्या एक्सटर्नल बेनिफिट है? सर अगर कोई और लगाएगा तो वो फैलने से रुक जाएगा। उस बंदे को क्या बेनिफिट है जो ना वो वैक्सीन बेच रहा है, ना वो वैक्सीन लगवा रहा है? तो सर अगर वो प्रोड्यूसर उसको वो डिजीज लगने से उसके चांसेस कम हो जाएंगे। एग्जैक्टली चांसेस कम हो जाएंगे इवन दो उसने खुद वैक्सीनेशन नहीं करवाई, बट बाकियों से जिन्होंने उसके आसपास करवाई हुई है उनसे एटलीस्ट वो अफेक्ट में नहीं आएगा, राइट? सो these are the goods which are, are provided sometimes for free or very low price, at very low price in large supply by the government because it has external benefit that the danger of transmitting disease from vaccinated human being to others is low. अब वो जो डेंजर है वो डेंजर कम हो जाएगा, ठीक है? बट private hospitals will only sell it to those who can afford to pay the hefty amount because private firms' purpose is social welfare. It is to maximize profit. उनका पर्पस ये है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, इस वजह से वो ये काम कर रहे हैं।
ठीक है, सो दे आर, इट्स नॉट लाइक के मैरिड गुड्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। दे आर प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, बट ओनली टू दोज हु कैन अफोर्ड टू पे, अदरवाइज वो नहीं प्रोवाइड होंगे। You can write this part down, then we'll move to the next part. हो गया सर। Great. Neji, now we are going to move on to the next chapter. And the chapter is 2.11, Mixed Economic System. Definition of mixed economic system. A combination of planned and free market economy is the mixed economic system. Ownership is divided between private and public sector. This is a system of government and private sector. Government in this system helps in overcoming many drawbacks of market system. इसका मतलब ये कि ये कॉम्बिनेशन है प्लैन्ड और फ्री मार्केट इकोनॉमी का, और यहाँ पर ऑनरशिप जो है वो डिवाइड की गई बिटवीन द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देता हूँ कि वी स्टडी 2.9 जो था फ्री मार्केट इकोनॉमी पे।
सो वी स्टडीड कि फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, उसके क्या फायदे हैं कि द कंज्यूमर्स आर गेटिंग वैरायटी ऑफ गुड्स, द क्वालिटी इज गुड, द प्राइसेस में बी लो, all those things they respond quickly to the changes in consumer demand. But that is not all true. The other side of the truth is कि उसके drawbacks बहुत सारे हैं. That the private sector is working on its own और प्राइवेट सेक्टर के साथ बहुत सारे फिर प्रॉब्लम्स भी रिलेटेड हैं. ठीक है ना? जस्ट गिव मी 1 मिनट. अच्छा, तो हमने ये कहा कि बहुत सारे फायदे हैं, बट एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स एज वेल. और वो ड्रॉबैक्स बड़े सफेद किस्म के ड्रॉबैक्स हैं, छोटे मोटे ड्रॉबैक्स नहीं है उसके. जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट कि when the private producer is producing, so they ignore the impact of their productivity on the people, environment, and the animals. और पे एलोकेटिव और प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी होती है. प्रोडक्शन में भी दे आर ओनली गोइंग टू प्रोड्यूस फॉर दोज हु कैन अफोर्ड टू बाय. और फिर उसी हिसाब से वो अपने रिसोर्सेज यूज करेंगे जो उनके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है. इफ हायरिंग वर्कर्स इज नॉट प्रॉफिटेबल, दे आर नॉट गोइंग टू हायर, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी कंट्री. तो ये वो सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि क्रिएट होते हैं. डीमेरिट गुड्स बनेंगे बिकॉज दे आर बेनिफिशियल इफ दे आर प्रॉफिटेबल. Merit goods are not going to be produced more if they are not profitable. They are only going to use the resources when they are profitable. ठीक है. एक्सटर्नल कॉस्ट है, दे डोंट केयर अबाउट इट. एक्सटर्नल बेनिफिट्स होंगे कुछ प्रोडक्ट्स को बनाने से, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस until unless they are getting the profits out of it. जिसकी वजह से एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप करने की जरूरत पड़ती है जहां पे प्राइवेट सेक्टर काम करे बिकॉज उसके बेनिफिट्स हैं, बट प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटीज को, उनके बिहेवियर को थोड़ा टेम करना या उनके बिहेवियर को थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड देयर. तो गवर्नमेंट ऐसे सेटअप में कुछ ड्रॉबैक्स जो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के हैं उनको रिजॉल्व करने में हेल्प करती है. ठीक है. तो बैकग्राउंड मैंने 2.9 से 2.10 पे और 11 पे अब दे दिया. अच्छा, अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट गवर्नमेंट कैन डू एक्चुअली. Provision of merit goods. This government can do. Provide welfare benefits. किन लोगों को? पुअर को, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट. Support the unemployed people. Banning production of demerit goods. Then introduce laws to protect animal welfare and environment. And lastly, address market failure.
using indirect taxes, subsidies, and other regulations. We are going to talk about all of these factors one by one separately. ठीक है? वन बाय वन हम सारे फैक्टर्स को आगे पढ़ेंगे. जी कर लो कंप्लीट फिर आगे चलते हैं. हो गया सर। चलें जी. हाँ जी, some economies are more mixed than others. A very small topic, not too much. Short सा topic है. In many mixed economies, the size of the public sector is relatively small. The market economic system dominates, या मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम ना कहें इसको, बिकॉज उसमें गवर्नमेंट तो है. So we can call it, in simple terminology, the private sector dominates resource allocation, decisions in the economies. Some national economies have very large public sector measured by amount they produce.
In some countries, the private sector is dominating, although they are mixed, but private sector ka role zyada. In other countries, you see that the government role is very high. They're having a huge role there. Once you're done, let me know. हो गया सर। Now, government intervention to address market failure. If government is able to correct market outcomes, it can increase output, increase income, and living standards. A government may intervene using following microeconomic policy measures. गवर्नमेंट मार्केट फेलियर को करेक्ट करती है किस तरह से वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द पॉइंट्स जो हमने बात की थी कि जो ड्रॉबैक्स है मार्केट फेलियर के सॉरी मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के कि मार्केट फेलियर हो रहा उस मार्केट फेलियर को गवर्नमेंट इज द वन हु इज गोइंग टू रेगुलराइज तो अब वो रेगुलराइज कैसे करेगी उसके ऊपर हम वी आर गोइंग टू डिस्कस आफ्टर यू आर डन विद दिस हो गया सर। आगे चलते हैं डायरेक्ट प्रोविजन इसको करेक्ट कर लूं डायरेक्ट प्रोविजन क्या हुआ ये क्यों नहीं हुआ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेट पता नहीं क्यों लिखा हुआ ओके सो free provision of goods and services by government to those who cannot afford. Government nationalize मतलब कि government taking over the private firm.
Government nationalized firms to have direct control over the market supply. That how much is to be produced, at what price to be produced, and who is going to receive the product. ठीक है, दोनों चीजों को इन्फ्लुएंस करना है ना, सप्लाई को भी इन्फ्लुएंस करना है और प्राइस को भी इन्फ्लुएंस करना है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। Bus and train services are nationalized in many countries. क्यों नेशनलाइज होती हैं? क्या वजह है? बताएंगे? किसकी सर? बस एंड ट्रेन सर्विसेज जो है वो नेशनलाइज होती हैं बहुत सारी कंट्रीज में। वाई? सर अगर जो प्राइवेट फर्म्स होंगी उनकी बस की टिकट्स बहुत महंगी होंगी, तो जो नॉर्मल पब्लिक है उनको अफोर्ड नहीं कर सकेंगी। एग्जैक्टली। दिस इज टू कीप लो फेयर्स, to encourage more people using the service. यह है डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। ये बनवाना ही नहीं है प्राइवेट सेक्टर से। प्राइवेट सेक्टर कोई चीज बना रहा है उसको नेशनलाइज करके आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करें और प्राइस भी अपनी सेट करें। इसको लिख लें पहले।
ओके सर। Okay, Musa. Continuing with the next topic then. Regulations including price control. Okay. So now regulations are legal rules made by government to control the way people or firms behave. Regulations therefore controls the forces of demand and supply in the following ways. Number one, to loan or restrict the production and consumption of demerit goods and products which creates external cost. इसका मतलब है कि हम अब रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं कि क्या रेगुलेशंस फर्म्स जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं. These are basically the legal controls on the firms. ठीक है. और इसकी बहुत सारी फॉर्मेशंस हैं. पहला, ये मैंने क्यों ये इसको अलग क्यों लिख दिया? ये to ban or restrict the production and consumption of demerit goods. कि प्रोडक्शन ना हो या कंजम्पशन ना हो डीमेरिट गुड्स. ठीक है, या तो आप उसको बैन कर दें या फिर आप रिस्ट्रिक्ट कर दें. ठीक है, विच क्रिएट्स द एक्सटर्नल कॉस्ट. उसको बैन करें या रिस्ट्रिक्ट करें, ये पहली चीज. सेकेंड इज टू प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरमेंट एंड एनिमल वेलफेयर. ठीक है जी. इंक्लूडिंग अ बैन on testing of cosmetics on animals and limit on types of cosmetics yeah overall the types and populations pollutions populations क्यों बोल रहा हूँ? Different forms. अच्छा, ये कॉस्मेटिक्स से हट के भी you are putting a limit on the types
and pollutions, different forms can basically release into environment. So you are probably banning the testing of cosmetics on animals, and you are also limiting the type and amount of pollution. Amount तो लिखा ही नहीं. The types and amount भी लिखे ना. Amount of pollution different forms can release into environment. By amount we mean कि कितने tons of carbon emission let's suppose वो कर रहे हैं. This is the second thing. Then the third thing is to set minimum. ये भी एक प्रॉब्लम था खास तौर पे monopolies में कि वो inefficient थी free market economies में. So now what they are doing is they are setting the minimum acceptable standards, including product safety and quality. ठीक है. Delivery time and customer complaints. ये सारी चीजें. Then the next is to control market price. Now price controls. मार्केट प्राइस को कैसे कंट्रोल किया जाए? पहले मैं इसके लिए we need to understand what price controls are. Price controls are legal minimum because we are going to do both of them. Minimum and maximum prices, and the reasons are also going to be provided. क्योंकि for certain goods we apply the minimum price concept, and for certain we apply the maximum price concept. So our legal minimum and maximum prices set by government in the markets for certain goods and services. For example, high minimum price can be used to reduce the consumption and undesirable price control का टॉपिक तो नहीं नीचे आया. अच्छा ये तो बहुत ओपन है. चलो I'll put the headings, कोई मसला नहीं. High minimum price can be used to reduce the consumption इसे आप ऊपर कर and देंगे? जी 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 ये बात मैं ये पॉइंट बस लिख लूं बस फिर मैं ऊपर करने लगूं बस. जी High बोल। minimum price can be used to reduce the consumption and undesirable
products of undesirable products basically. High minimum price set की है to reduce the consumption of undesirable products while maximum price किसके लिए है? इसकी अभी डिटेल आएगी आगे कि setting maximum price क्या है, setting minimum price क्या है with the graphs. While maximum price can stop private firms from achieving a higher profit for goods that are essential. क्यों? क्योंकि हायर प्रॉफिट्स होंगे, हायर प्राइसेस से हायर प्राइसेस होंगी तो people might not be able to buy those essential goods. तो उनकी कंजम्पशन के लिए मैक्सिमम प्राइस सेट की जा रही है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम हो और मिनिमम प्राइस सेट की जा रही है उन डीमेरिट गुड्स के लिए ताकि वो कम से कम प्रोड्यूस हो. सो मेरिट एंड डीमेरिट का यहाँ पे कंपैरिजन आ जाता है. लें जी, सो दिस इज इट अबाउट दिस फॉर टुडे. ये लिख लो कौन सा जोन सा भी पार्ट रह गया यहाँ से, ठीक है. सर बस ऊपर वाला रहता हम्म. है जहाँ से लिखना शुरू किया था वहां से. अच्छा अच्छा. बस. रेगुलेशंस इंक्लूडिंग प्राइस कंट्रोल्स. जी सर. हम्म. हो गया सर. Okay, so this is it about this for today. In the next class, we'll continue from here. Right. जी Okay, सर. then take very good care of yourself. Allah Hafiz.